नेत्रहीनों की उम्मीदों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक समाजसेवी संगठन ने एक मार्च निकाला। इसका खास मकसद नेत्रहीनों को बोझ समझने वाली समाज की सोच में बदलाव लाना था। दूसरे की अंगुली नहीं छड़ी पकड़ो, फिर जीवन भर शान से अकड़ो। इस संदेश के साथ ये नौजवान नेत्रहीन अपनी मंजिल पाने को निकल पड़े हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट स्वयं ने AICB और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर 15 अक्टूबर को व्हाइट केन डे मनाया। इस अभियान के माध्यम से इन्होंने ये जताने की कोशिश की कि वो किसी की हमदर्दी के मोहताज नहीं हैं, बल्कि वो अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं। किन के सहारे हमारी ज़िंदगी पूरी चलती रहेगी और व्हाइट किन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्लाइंड व्यक्ति, हर ब्लाइंड स्टूडेंट को, छात्र को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि छड़ी से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये हमारी छड़ी है, इससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नेत्रहीनों का सूचक बन चुकी सफेद छड़ी को ही आधार बनाकर ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। ये जो है वो इंटरनेशनली एक सिंबल माना जाता है जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनकी इंडिपेंडेंस के लिए। तक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सेसिबल और बैरियर फ्री नहीं होगा तो चाहे वो विजुअली चैलेंज हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे फिजिकली चैलेंज हो, वो अपना दिनचर्या, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी इंडिपेंडेंस और डिग्निटी के साथ नहीं जी सकते। नेत्रहीन लोग आए दिन सड़कों पर तमाम तरह की परेशानियों से जूझते हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इनकी परेशानियों को समझे और इसका निदान निकाले। कैमरामैन गंगा सिंह के साथ दीपक बिष्ट, टोटल टीवी, दिल्ली। टेक्टोनिक्स इंडिया लिमिटेड और लेजर एजुकेशन के सहयोग से इंडिया रोबोट ओलंपियाड 2007 का आयोजन किया। is NDTV. And you're watching Metro Nation Delhi. Wow. Since I'm already sounding very nasal with cement in my brains, and can't we just sing that song from Raja Hindustani, the one which talks about Pardesi? Here we go, at your risk, I'm closing my ears. परदेसी परदेसी खाना नहीं, खाना यही actually. We'll go on to lots of other stuff now. We'll leave singing for now. And an issue that we all need to work on, this is on a more serious note, is that especially people requiring special needs in Delhi. You know, 1/3 of all visually impaired people live in India, and more than a lakh of them are in Delhi. Well, of course, today we've asked Delhians to help out and make the city more user-friendly. Let's take a look. On International World Cane Safety Day, All India Confederation of the Blind and SWAYAM decided to take a walk through Delhi for the cause of the visually impaired. So let's meet Mr. S.K. Rastogi, who is one of the organizers of the walk. So, sir, what is the message that you want to give through this walk? See, we just wanted to send a message to our blind brethren and sisters to take the white canes in their hands, learn mobility, and come out on the roads and move wherever they want to move. On the other hand, we want to draw the attention of the traffic police, the transporters, the public at large to identify that the girl or a boy or a man or a woman walking with a white stick in his or her hand is a person with vision impairment, and he is as competent as anybody else in the world. So, what would you like to say about the kind of transport arrangement in Delhi, specifically speaking about the visually impaired? See, Metro Railways have done a good job, which is more or less accessible for the vision impaired persons on most occasions. The one thing is that buses usually don't stop at the proper place. If I'm standing at the stop, if a bus stops, say 20 meters to my left or right, by the time I try and find out which number the bus that has stopped, and by the time I try to reach the bus, but bus starts and leaves, then either just near the bus, towards the bus stop, or just around the bus stop, there are manholes, uncovered manholes. They create the problem. Then if I reach somehow the bus stop, I don't know whether I am exactly at the bus stop or I am still away, or I have overgone the bus stop. I have left the bus stop. So there has to be some indication at the bus stop.
So once the roads are safe, once the transportation system is in tune, these white cane sticks are wonderful device for us. Okay. They give us the independence, the emancipation from our own disability. Thank you so much for speaking to us, It's my sir. pleasure. Well, that's a message for the capital to be a little more sensitive to its visually impaired population. This is Aransh Sugandh for NDTV. Precisely, and we should all take care of that message. It doesn't hurt to help, and if you can lend a helping hand Oh yeah, to and somebody it's who not needs too much of a thing to work it out, you know. it. Precisely. Well, Metro Nation is very thrilled to report a very happy ending, or I'd rather say a very happy beginning.